start with the blessings. Mangalacharan, the auspicious start. Hope everyone is doing well. With that, let's take the blessings of the Acharyas and Guru Maharaj. Om. Ajnanatimirandhasya Jnanajnanashalakaya Chakshurunmilitam yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam yena bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Gurun Shri Yudhapadkamalam Shri Gurun Vedam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatha Vitam Tam Sajivam Sadhvetam Sabhadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakha Vitam Cha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kirpal Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Namo Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pachat Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Ki Jai Gurudev Maharaj Ki Samve Bhakta Vrinda Ki Jai 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 Shri Radhe Shyam. Hare Krishna everyone. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Then let's resume our discussion on Goloka chart. What we have been covering so far. We started from the spiritual world because we are used to of material world. We know material world very well. So we discussed Goloka Dham. Then we went down to Vaikuntha, and then the transition. And now we are going to see what we call Devi Dham. So this is what we have already discussed. Even though if there, at any point, if there is any question, any comment on any of those topics which we have already covered, feel free to raise it. Because again, as we always say, this is the discussion session rather than just a lecture or a seminar. It could be considered as. So this is where we were. We started from Brahmajyoti. Then we got this Karnadakshai, Vishnu in Karna, ocean, Kaujal, Viraj river. In this, we have the clouds made up of Vedas. And where we go, Rama Devi, Maya Devi. From Rama Devi, we go Maya Devi. From Sadashiv, we go Shambhu. From Shambhu and Maya Devi, now the Maya. So that's the reason this Dhama, material world, is called Devi Dhama. Because this is Maya. Everything what we see here is Maya. This is what Mayavadis, what Srila Prabhupada always referred
Advaitis, and all those who consider everything here is being Maya, they are called Mayavadis. So if you read Srila Prabhupada's books, they are referred Mayavadis. So Mayavadis are some of those who don't consider that there is anything apart from this Maya. And that's where the difference is. So they say this is the material world and that's it. This is what it is. There's no spiritual world. There's nothing apart from what we see. And what we see is Maya. And when we will realize this is Maya, then we will become God. That's what Mayavadis love to say. But of course, what coming from Brahma, Madhva, Gauriya, Sampradaya, we consider as it says in spiritual world, in the Goloka chart, there is a spiritual world, and what Krishna says in Bhagavad Gita, that at the time of death, whichever consciousness we are in, that will be the first consciousness of our next birth. That will decide where our next birth will be. In material world, back in the spiritual world. And if we read Bhagavatam, in Bhagavatam, there are many examples. Jar Bharat is a great example because he had a few births like that. Mataji, you go hand up, please. Hello. Pranam to you, Prabhuji. Yes, this desire and the sort of thoughts at the last phase of our life or the last moment of our life, does it preside over our desires throughout the life and our karmic activities that we have done? Because more emphasis is placed on the last thoughts at the time of death. Yes, the reason is that it says that it doesn't really matter what we have been doing. At the end, whatever is inside will come out. So that's why devotees, they don't really worry about the last thought, because throughout the life, if they are engaged in devotional service, if they are taking the name of the Lord, then at the end, the name of the Lord will come out, and then we will get engaged in Lord service in the next birth as well. But otherwise, a lot of those who are very new, when they hear this, they say, okay, well, that's good. Let us enjoy the life. Let us do everything we want to and don't follow the regulative principle. And when we are about to die, we will take the name of the Lord. And still in India, to a great extent, that happens. I remember my wife says that her grandmother, when she was passing, then the grandfather, who's a great Brahmin, he was asking her to take the name of the Lord Rama. So they are from Ayodhya, from Varanasi. So that belt, it says they all are the followers of Lord Rama's, which is great. So the grandfather was reminding grandmother to take the name of the Lord right at the last moment when she was dying. But if we haven't taken the name of the Lord throughout our life, then is it possible to take at the end? It says it's very hard. And how we can understand this? If you think about a lot of time, what happens that if we get hurt unintentionally, we have hurt ourselves, something comes out. And it's been a while. And when I hurt, I still say, Mummy. And I try to take the name of the Lord as much as possible. But last time when I heard, I didn't say Krishna. I said, Mummy. And then I called my mom. And my mom, I was lucky enough that my mom got me into Krishna consciousness. So I said to her that when I got hurt, I could not think of Krishna. And it could be that you bang your head, kids are around, they're playing with something, and while you are there, something bang, dum, and you are in pain. At that moment, you can't think what you want to say. Something which is really, truly you are attached to, that thing, that word will come back. And that's what it is. A lot of time people take, so this is coming from another religion, and somebody who was 72, 74 years old, he said to me that we should never take the name of the Lord in pain. Because a lot of time when something goes wrong, people say, Jesus. And then he was explaining me that we should not say that.
So if something goes wrong or something is surprising, people, they say that. But as from the Bible, he explained me that we should not do that. But what we say here, that if we see something good, we should take the name of the Lord. If we are in pain, we could take the name of the Lord. We should take the name of the Lord, because everything is happening. And with this practice, whether we think of it or not, consciously and subconsciously, at the end, only Krishna's name will come out. But in Bhagavatam, there is one place where it says that we can't think at the time of death how much pain it happens. And it says thousands of spiders biting at the same time. And if we can imagine, I mean, it's hard to imagine, but if you think of anything, I remember when I was in Dubai, there was one particular type of ant, red ant, and that bit me. And that pain was there with me for 4 days. For 4 days, I was in pain, and the whole leg was swollen. It's not just that it was bitten and it was the pain. The reaction was there in the body. And that was just little. Now, if you think of a poisonous, not all the spiders or scorpions are poisonous, but if you think of this poisonous scorpions, then thousands of them at the time of death. So it's very hard to take. So, but yes, what will come out? Whatever we have been doing throughout the life. So the question you said, that will it supersede? Will it overpower? Well, in one sense, it will overpower. But in other sense, if we think about only what we have been doing throughout our life, that will come out at the end. So there is another couple of past times with that. It happens with Lord Brahma, not Brahma, Lord Buddha. Lord Buddha had, so obviously when the time he came up, he rejected all the Vedas. But a lot of Brahmins used to do many rituals. And somebody came to him and somebody said that, oh, my father died. Could you do something? And he was in pain. He was crying. And he was saying, could you do something so he will go to heaven? And Lord Buddha said, well, what can I do? He said, well, you are a great liberated soul. These priests are doing something and they are saying that if you will do this, then your father will get a place in heaven. And Lord Buddha said, well, this is what I've been explaining, but you are in pain. You won't understand. He said, okay, bring 2 pots. And he said, fill 1 pot with the stones and 1 pot with the stones. And he thought, okay, he got very happy. He was, wow, Lord Buddha, he's going to do something. He's going to do something, because Buddha never did anything like that. But in that scenario, just to make him understand, he did. So he brought those 2 pots, big pots, one filled with ghee and one with stones. And then he said, okay, drop them in the water. So there was a river nearby. Drop them in the water. He said, bring a big stick, because at the time of death, usually we bring a big stick, and where the head is, so the sun will take the big stick and hit the head of the dead body. That's how the ritual goes. And he thought something similar, because that at the time of my father's death, Buddha wasn't there, so he could not do that there. He's doing it here. So he said, okay, break these 2 pots. And the 2 pots broke down. All the stones fell down. All the ghee came up. And he said, could you bring all those priests and ask them to do all the prayers they want to do, all the Vedic hymns they could chant, and could they bring these stones up on the water surface, and this ghee floating on the surface, could they take that down? And he goes, well, no, that's not possible. How come somebody could bring those stones up and ghee pull it down? No, that's not possible. He said, that's what I'm explaining you, that based on the karma we do throughout the life, end destination will be that. You cannot change it. If your father throughout his life, he has done great pious activities, his karmas will be like ghee. He will rise above all the 3 modes. But if he has done gross material tasks,
then like these stones, they will fall down. Nobody can save him, neither you nor me. It's based on what you have been doing all your life, how you have been leading your life throughout. That will take the end. And this was one of those pastimes in Buddhism they discuss a lot. But this comes back to the same point, that whatever we are doing, we have been doing throughout the life, that will come back at the end. So we should not wait until the end. We should take the name of the Lord now. So we get into the practice, and then we can see, we can observe what happened. And a lot of times, devotees, when they get hurt, they take the name of the Lord. They can't think of anything. There is another example. I think it happened in Australia. One of the Mataji been in Krishna consciousness for many years, and she lost her memory. In old age, a lot of times different kind of diseases happen. She completely wiped off her memory. She could not think of anything. She could not recognize the father. She could not recognize husband, son, the family, nothing. But the doctor called the family and said, there is something she's reciting again and again, and I can't understand what it is. When the family went there, family could not understand either. But then they could understand it could be something religious. And she was associated with ISKCON there. And then when the ISKCON devotees came back there, they realized that she was reciting Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. How the whole memory was wiped off and only this Mahamantra stayed there, it's still a mystery. Devotees, they could not say anything about it. The doctors, they could not say anything about it. But I think it's been documented as well. So I think on YouTube somewhere devotees share it. But it happens. It happens because she was a devotee for that long, and she was the only one, even though her family could not, but she was the one completely surrendered. So thank you so much for that question, Mataji. Hare Krishna. So now we are going to get to the very interesting bit, that what it's called Mahatattva. And let's see in bits. Okay, Hare Krishna. मैंने अभी ध्यान दिया कि हमारे साथ में हिंदी भाषी भक्त भी हैं. So सभी को प्रणाम. और हमने अभी तक जो भी डिस्कस किया, हम आगे डिस्कस कर रहे हैं गोलोका चार्ट. गोलोका चार्ट में जो हमारे पास में आध्यात्मिक जगत है वो कैसे बन रहा है. तो महाविष्णु से रमा देवी निकली, रमा देवी से माया देवी जो रमा देवी की छाया है, और सदाशिव जो कि आध्यात्म जगत में है, आध्यात्मिक है पूरी तरीके से, उनसे शंभु निकले. अब ये वो शंभु हैं जिनसे शिव निकलेंगे, और शिव मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक संसार में हैं, लेकिन वो खुद भौतिक नहीं है. लेकिन शंभु जो हैं वो सदाशिव से निकले हैं, और वो माया देवी के साथ में मिलके, इसलिए इनको डिवाइन कपल माना जाता है कि शंभु माया देवी अब ये आगे सभी जीवों की उत्पत्ति करेंगे. लेकिन वो सभी, हमने कहा उत्पत्ति करेंगे, लेकिन वो सभी जीव शंभु और माया देवी के पास में कहां से आए हैं? वो कारणोदक्षाय विष्णु की विजन से, हम कहते हैं, अगर हम देखेंगे ग्लांस से, वो माया देवी के पास में गए हैं थ्रू रमा देवी. तो रमा देवी से होते हुए माया देवी के पास में गए हैं. महाविष्णु विष्णु तत्व है, और वो मोड ऑफ गुडनेस में है, तो वो माया देवी के डायरेक्ट टच में नहीं है. लेकिन शंभु, क्योंकि वो मोड ऑफ इग्नोरेंस को कंट्रोल करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. लॉर्ड शंभु इज नॉट इन मोड ऑफ इग्नोरेंस, ही कंट्रोल्स मोड ऑफ इग्नोरेंस, एंड दैट्स द रीजन ही इज देयर. सो शंभु जो है मोड ऑफ इग्नोरेंस को कंट्रोल करने के लिए जितने भी जीव तत्व महाविष्णु के पास होते हैं, वो सारे के सारे महाविष्णु माया देवी को देते हैं. अब शंभु और माया देवी आगे विस्तार करते हैं. वो विस्तार कैसे होता है उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं. सो आगे अब हम महातत्व को देखेंगे. महातत्व वो है जिससे ये पूरा हमारा शरीर बना है, जो 24 तत्वों की हम बात करेंगे, और पूरी की पूरी जिसको हमने कहा देवी धाम है, ये माया देवी से पूरा का पूरा जगत बना है. तो वो किस तरीके से बना है, डिटेल्स के अंदर यहाँ पे बताया गया है.
और अगर आप ये डिटेल पढ़ना चाहें तो श्रीमद् भागवतम के अंदर, जो हम आगे पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम के अंदर कैंटो 5 के अंदर ये बहुत अच्छे से बताया गया. सो श्रीमद् भागवतम कैंटो 5 from chapter 16 onwards, the creation has been explained in very much detail, and we will see how much detail we could cover. Right, okay. So millions of golden universes. हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा एक जगत है, हम जिसके अंदर हैं, एक ब्रह्मांड है, ऐसे कई ब्रह्मांड है. और वर्ड यूज हुआ है गोल्डन, स्वर्ण. इसको स्वर्ण अंड कहा गया है यूनिवर्स को अपने भागवतम में. सो मिलियंस ऑफ गोल्डन यूनिवर्सेस कम्स आउट ऑफ Mahavishnu's body. Each universe is enveloped by 7 subtle coverings, and the Adi Devta reside there in great opulence. So we have seen 2 things now, and we will see in detail the each and every golden egg we will see, each and every universe we will see. We are in one of it. There are 7 coverings. So हम एक ब्रह्मांड में हैं, ऐसे जितने ही भी ब्रह्मांड हैं, हर ब्रह्मांड के ऊपर 7 कवरिंग है. जैसे कि अगर हम एक बॉल लें, उस बॉल के ऊपर पहले हम दूध लगा दें, फिर उसके ऊपर हम दही लगा दें, फिर उसके ऊपर हम शहद लगा दें, उसके ऊपर हम सॉल्टी वाटर लगा दें, उसके ऊपर हम रेड कलर की टेप लगा दें, व्हाइट कलर की टेप लगा दें, ब्लैक कलर की टेप लगा दें. सो उस बॉल के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट मटीरियल्स हैं, और ये बहुत सटल है. सटल का मतलब जितने भी अभी मैंने एग्जांपल दिए, इसे हम टच कर सकते हैं. सटल होता है बहुत बारीक, जिसको हम देख नहीं सकते. जैसे हमारा मन है, उसे हम देख नहीं सकते. कहते हैं मन कहाँ है आपका? अरे यार मेरा मन तो इंडिया में है. इंडिया में मन कैसे पहुंच गया? मन तो आपका है. क्योंकि मन सटल है, मन ग्रॉस नहीं है. So this is the way we understand there are different coverings on one single ball. We can have yogurt, honey, and then we can have different ball, different tapes, black, white, red, blue. But they are gross, what we can see, what we can touch. But what we are talking about here is the subtle coverings. We cannot touch them. We cannot even feel that. We cannot do it. We are material. But maybe the elevated souls, after a lot of practice, they can. And then Adi Devtas are there. So we will see the Devtas are there, heaven. In the heaven is also in material world. Those Devtas are also material. But these Devtas, they are Adi Devtas. They have come from Mahavishnu. Right? So all that is this is where the world is about to begin. The universe is about to begin. Remember, we gave the example of, we will see that again. We have a lot of ingredients. We call them pradhana. तो जिस तरीके से हम सब्जी बनाते हैं, सब्जी बनाने के लिए पहले हम रॉ सब्जियां ला के रखते हैं. हमने, अगर हम ब्रोकली की सब्जी बना रहे हैं, कॉलीफ्लावर की सब्जी बना रहे हैं, कैरेट की सब्जी बना रहे हैं, पीस की सब्जी बना रहे हैं, वो हमने ला के रखी है. अब हमने उसको एक जगह मिक्स करना शुरू कर दिया है. अब उसकी शेप, साइज, क्योंकि वो आपस में मिल गया है, वो डिफरेंट हो गया है, वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गया है किसी और चीज में. लेकिन अभी भी वो नहीं बना जो कि हमने खाना है. तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं. सो फर्स्ट स्टेज है प्रधान. प्रधान इज वेयर वी हैव इंग्रेडिएंट्स. सो प्रधान वो स्टेज है जहां पे हमारे पास सब्जियां अलग अलग हैं. Then the next is where we will see Mahatattva. So Pradhan and Mahatattva, they are the kind of same thing but different forms. Pradhana will transform into Mahatattva. And this Mahatattva is which will give rise to the material world. And the coverings we said, 7 coverings, those coverings are earth, water, fire, air, ether. Ether is a sky, we can call. And then false ego, and then Mahatattva itself. तो जो हमने कहा हर ब्रह्मांड के ऊपर 7 कवरिंग होती हैं. वो कवरिंग किस चीज की होती हैं? वो कवरिंग हमने कहा अर्थ की. जो अर्थ पार्टिकल हमारे अंदर होता है, जो हमारे अंदर पानी होता है, जो हमारे अंदर आग होती है, ये सब हमारे शरीर में भी होते हैं. इसलिए जो अद्वैती हैं, जिनको प्रभुपाद जी मायावादी कहते हैं, वो इस शरीर को ही कहते हैं ये शरीर ही ब्रह्मांड है. और एक तरीके से सोचा जाए तो बात भी सही है, क्योंकि इस शरीर के अंदर ही परमात्मा भी रहते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि ये शरीर ही सब कुछ है. अगर ये शरीर ही सब कुछ होता तो ये शरीर तो जब कोई मर जाता है तो भी वहां पे शरीर होता है, पूरा का पूरा शरीर वैसे ही होता है.
तो क्या चीज उसमें से निकल गई, उसमें से जो निकल गई वो इंपॉर्टेंट चीज थी। जैसे एक कार है, कार में से ड्राइवर निकल गया तो वो कार अब डेड है। इसी तरीके से अगर बॉडी से आत्मा निकल गई तो वो बॉडी डेड बॉडी है। तो ये कवरिंग्स पूरे ब्रह्मांड के ऊपर है। We are just about to enter into the Brahman, but these are the coverings of it. But the topmost is Mahatattva, and this Mahatattva is which is giving rise to everything. And in Bhagavatam, it explains and I think we have many slides there. We will see. हमारे पास कुछ slides हैं भागवतम में किस तरीके से बारीकी से समझाया हुआ है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्रिएशन कैसे होती है। अगर हम बाइबल लें तो बाइबल में ऐसा है कि भगवान ने 6 दिन के अंदर आते हैं पूरा का पूरे संसार का निर्माण कर दिया, बस इससे ज्यादा और कुछ डिटेल नहीं है। बट वो वी फाइंड, हम यहाँ पे हमको जो मिलती है डिटेल्स वो ये डिटेल्स हैं कि एक के बाद एक के बाद एक कैसे भगवान ने पूरे संसार की करी। और अगर हम सोच के देखेंगे, थोड़ा बहुत साइंस लगाएंगे तो वो हमें बहुत लॉजिकल भी लगेगा, जिससे हमको ये वर्ल्ड पूरा का पूरा बहुत सिंप्लीफाइड वे में समझ में आएगा। सो द वे वी अंडरस्टैंड इज very logical and very scientifically, the way it's been explained in Srimad Bhagavatam. And those references are given here. So Srimad Bhagavatam, Canto 6, Chapter 16, verse 37. And what that says, every universe is covered by 7 layers. So this is directly from Bhagavatam. Earth, water, fire, air, sky, also called ether, the total energy, what we are saying Mahatattva, and false ego, each 10 times greater than the previous one. So जब हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे इलुस्ट्रेशन के लिए डिस्टेंस सेम है, थिकनेस सेम लग रहा है, लेकिन कहते हैं जो अगर हम अंदर से बाहर जाते जाएंगे तो थिकनेस बढ़ती चली जाएगी, या हम बाहर से अंदर आते जाएंगे तो थिकनेस कम होती चली जाएगी। अगर हम अपने शरीर में भी देखें तो ऐसा ही होता है। अर्थ पार्टिकल कम है, वाटर पार्टिकल ज्यादा है, फायर और ज्यादा है। नाउ फायर, अ लॉट ऑफ टाइम we say, oh, we have a lot more water and less of fire, right? But the fire is there, but that fire is not on all the time, and that's why it is. In the Shastras we call it Jathar Agni. हमारे पेट में एक जठर अग्नि होती है, वो भी called digestion fire. In Bhagavad Gita, Krishna says, I am the fire in the belly which helps you in digestion. So that the source of that is also Krishna. If Krishna will take the mercy away, we will not able to even digest the food we eat. So, but that fire in the belly is not there all the time in the full. It's always there, but it's not there fully, right? It goes down and then it comes back again. So this is, if we try to understand the way it explains, we understand why it says that 10 times the thickness is there. Let's go back to the verse. तो ये जो वर्स है ये श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 16 श्लोक नंबर 37 से है, जिसके अंदर यही चीज बता रखी है कि हर ब्रह्मांड जो है वो ये 7 लेयर 7 कवरिंग से बना हुआ है, और 10 टाइम्स जो उसकी पिछले वाले से अगली कवरिंग जो है वो 10 times thicker है. They are innumerable. So that's the reason we say we don't know how many. There was a time science used to limit, but even the modern science has now agreed that we cannot count how many universes there could be, because there seems to be unlimited. And that's where the Shastra said originally, innumerable universes besides this one. This one, the one we are in. Hare Krishna Mataji. Yes, please. Yes, Prabhuji. If you go back to the previous slide, which shows the 7 layers, does it show fire, or did I miss something out? Sorry, Mataji, it's in the Goloka chart as well, but in the screenshot, this is actually between air and, if I will mark it here, between air and water. This is what I thought, yeah. This is right. Okay. Fire. Okay. Yeah. In the Goloka chart, it's actually highlighted in yellow, but this is just a screenshot of the Goloka chart, so that's why it's going down. Okay. And what does fire, it says
a personified form of? Personified. And each one is given like Vasudev, Shankara, You're right. Yes, I think let me open it. I can't read it, but I kind of remember. I think it says Yamraj, because Yamraja takes the. I've just opened the. Oh, sorry. It says Narayan. Oh, Surya Narayan. Yes, Surya Narayan for the sun. Yes, Surya Narayan for the sun. Yes. So, well, we can't read here. So, yeah. So this bit says Surya was, worship. This word says Surya, and then it says Narayan, Surya Narayan. So the sun gives us the. So again, what we are saying here is that these are the building blocks. Each and everything here in the world, in the material world, going to get their essence, their powers from this. So thank you so much for that question, Mataji. And that's right. Lord Vara, Lord Matsya, when they come along, then they take the effulgence from here. They take the power from here. Okay? Thank you. There we go. So if you move forward, so this is the words where what we were saying. Ananta is the word. What we says here. Kotibhistad anantaha. Ananta is unlimited, innumerable. It's hard for us to find out. Right? So these are the verses. These are the references. And it makes us much more relevant when we have the references with us. तो जब हमारे पास में references होते हैं कि जो भी चीज गोलोका चार्ट में है वो क्यों है, तो वो इन शास्त्रों से लेकर बनाई गई. और ऐसा नहीं है कि शास्त्रों में सिर्फ एक जगह है, काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो शास्त्रों में एक जगह है, उसी शास्त्र में दूसरी जगह भी हो सकती है, लेकिन दूसरे शास्त्र में भी हो सकती है. हो सकता है उपनिषद में हो, कहीं हो सकता है कि पुराणों में हो. And now a lot of places, for example, Shiva is the best Vaishnava. This has been explained in 3 different places. So obviously, Srimad Bhagavatam says this, Brahma Purana says it, and Vishnu Purana says that also. So then we can reconcile it together. That okay, if it has been said 3 places, then we can understand a lot of things. Now it says the first layer is earth, what we call Bhumi. The deity worshipped is Varaha. Now, what actually that means, the deity worship is Varaha, that when Varaha avatar comes in, then Varaha avatar is the one which takes his material things from Bhumi, from that material which is part of the Mahatattva, right? Because if Krishna is going to take the Leela, the part-time in material world, he will have to come in the material forms, right? Even though his body is spiritual, but again, he will have to come in the material form. तो जिस तरीके से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि जो पहली लेयर है वो अर्थ की बनी जो भूमि है, इसलिए हमको सबसे ज्यादा भूमि ही दिखती है. लेकिन उसके बाद में वरादेव हैं जो उनके डेटी माने जाते हैं. और काफी अलग अलग इसमें लोग ऐसा भी कहते हैं कि जब हम आगे इस चीज को डिस्कस करेंगे जब हमारे पास दूसरा एक पिक्चर होगी. अदरवाइज इस वक्त थोड़ा सा हमारे लिए सोचना मुश्किल होगा, हमने अगर ये बिल्कुल नहीं पढ़ा, कि जब हम जहां पर हैं वहां से निकलना शुरू करते हैं तो कैसे अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, फॉल्स ईगो एंड देन महातत्व तक हम पहुंचते हैं. ये हमारे लिए सोचना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आगे की तरफ हम देखेंगे. The wealth and bliss in this layer are million times greater than Satyaloka. Satyaloka भी हम देखेंगे. Satyaloka is the abode of Brahma ji. That's what we call Satyaloka. So Brahma ji की जो जगह है उसको हम Satyalok कहते हैं. Those who want to enjoy selfishly, like some yogis or materialistic bhakts, are kept away from the spiritual world by the temptation of this layer. So somebody asked the question that why do we have these layers? Now, why do we have the layers? In the kitchen, we see if we want to extract 2 different things, we have the sieve. Yeah, we call it sieve. और हिंदी में हम कहते हैं छन्नी. अगर हमको 2 चीजों को अलग अलग करना है तो हमारे पास में छन्नी होती है. हम उसके अंदर से जैसे पनीर अगर घर में बनाते हैं, पनीर को उसमें डालेंगे तो पनीर ऊपर ऊपर रह जाएगा, जो नीचे मिल्की
बटर है, उस मिल्की वाटर है उसका, जो हमें नहीं चाहिए होता, अगर नहीं चाहिए तो हम उसको नीचे जाने देते हैं, चाहे हम उसको अलग इकट्ठा करें या हम उसे ड्रेन आउट करें, पर दो चीजों को अलग करने के लिए। उसी तरीके से ये डिफरेंट लेयर्स बनी होती हैं कि जो अलग अलग मटीरियली वर्ल्ड में स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के हिसाब से जो लोग जाते हैं वो इन लेयर्स के हिसाब से रुकते चले जाते हैं। बट जो डिवोटीज होते हैं, जिनको भगवान के अलावा और किसी चीज के ऊपर नहीं होता, तो वो अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ये सारे के सारे पंचभूत माने जाते हैं। तो ये पंचभूत जो हैं, इनके परे डिवोटी होता है, क्योंकि डिवोटी तीनों गुणों से परे होगा। डिवोटी इन पंचभूतों से रिलेटेड कोई चीज की डिजायर नहीं करता, तो इसलिए वो यहाँ पे अटकता नहीं ले। और इसके भी लघु भागवतम के अंदर एग्जाम्पल आता है कि किस तरीके से एक गोपाला डिवोटी होते हैं, वो ट्रेवल करते हैं तो उनको ये सारी डेस्टिनेशन दिखती हैं और यहाँ पे सारी चीजें दिखती हैं और सब उनको ऑफर होती हैं, लेकिन वो उनको उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होता। So this is just like a filter, each and every layer. So those who are not yet ready to go back to spiritual world, they will stop there. They will stop there. And this is what Mahatattva is doing. So again, Pradhana to Mahatattva. Pradhana is the mixture of everything. In Mahatattva, we have a clear distinction of different things now. But let's get a bit better explanation. Here we go. This is coming directly from Srimad Bhagavatam, Canto 2, verse 5, verses 22 to 32. Ingredients of creation, right? So this is Canto 2, and this is the ingredients of creation. But I gave you the reference of Srimad Bhagavatam, Canto 5, chapter 16 onwards. That's the creation itself. We will see that as well. But this is the ingredient of. So, for example, somebody is discussing how to make chapatis, but have not seen the chapatis yet. So the creation is chapati, and the ingredients are, or the way it explains here, the process is there, that how everything comes together. तो यहाँ पे क्रिएशन जो शुरू हो रही है वो अभी हुई नहीं है, लेकिन उसके लिए सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे हो गए कि हमको हमारी जो मटेरियल क्रिएशन होने वाली है, जिसको हम देवी धाम कहते हैं, वो अभी तक बना नहीं है, लेकिन उसको बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें हैं। और ये सब महातत्व जो है, ये महातत्व महाविष्णु से आया है। ये धीरे धीरे अभी तक जितनी भी चीजें हैं ये महाविष्णु से आई हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छी एनालॉजी देते हैं। किसी ने कहा कि ओ साइंटिस्ट्स can do everything. So Srila Prabhupada ji gave a great reference that scientists, these days modern scientists could do everything, we don't need God. कि हमें भगवान की जरूरत नहीं है, मॉडर्न साइंटिस्ट जो है वो सब कर सकते हैं। तो फिर प्रभुपाद जी ने कहा वेरी नाइस, मुझे बताओ कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा, so Prabhupada ji asked, let me know how to do it. So somebody said, oh well, first you bring this and then you bring this, and then he said, then you have the fire. And then Prabhupada ji said, stop. Where the fire came from? And he said, we have fire available. I said, bring your own fire. I said, okay, we can make our own fire from these things. Like we have two stones. We can rub the stones and we can get the spark out. And then if we have the fuel, we can build the fire. He said, where the stone comes from? Bring your own stones. And if we think about the logic is, that whatever we are doing it based on the ingredients Lord has provided us. तो श्रीला प्रभुपाद जी ने जिस तरीके से समझाया, और बाद में वो साइंटिस्ट समझे इस बात को, जब वो उन्होंने कहा नहीं हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके अंदर हम इसको मिक्स करेंगे, उसको मिक्स करेंगे, नीचे से फिर आग लगाएंगे। श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा वो आग कहाँ से आई? उन्होंने कहा आग कहाँ से आई, आग तो है। कहते अपनी आग बनाओ। उन्होंने कहा ठीक है अपनी आग बना लेंगे, दो पत्थर को लाएंगे रगड़ेंगे। उन्होंने कहा पत्थर कहाँ से आए, क्या आप पत्थर भी अपने बनाएंगे? तो उनको समझ में आया कि किस चीज के बारे में प्रभुपाद जी बात कर रहे हैं, कि जो भी हम क्रिएट करते हैं उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भगवान ने ही दिए हैं। उसके बिना तो, अगर बाकी सबको भी छोड़ दिया जाए, अगर साइंटिस्ट ये सोचे, जो बुद्धि दी है, द विजडम, कृष्णा सेज आई हैव गिवन द विजडम, ददामि यद बुद्धि, एंड देयर आर सो मेनी डिफरेंट वर्सेस ऑन दैट। भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं भगवत गीता में कि मैं ही देता हूं वो विजडम, और जो इंसान फिर भूल जाता है तो वो भी मैं ही भुलाता हूं।
जो हम भगवत गीता के 15 के अंदर वर्स है, चैप्टर 15 वर्स 15, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, मैं ही सबके हृदयों में हूं और फिर मैं ही देता हूं अपोहनम चा, स्मृति अपोहनम मतलब रिमेम्बरेंस भी मैं देता हूं, फॉरगेटफुलनेस भी मैं देता हूं. एंड इफ यू थिंक अबाउट इन महाभारत, Karan had everything, but at the end he was cursed, and because of that curse he could not recall all those powers. So he had his hand up and he was calling for those powers, those weapons, but because of his own guru's curse he could not recall all of them. तो हम भगवत गीता, हम महाभारत का जो एग्जाम्पल के अंदर देखते हैं कि कर्ण जो थे उनके पास वो सारी पावर्स थी जो अर्जुन के पास थी, लेकिन भगवान अर्जुन के साथ थे. और इनके जो खुद के गुरु थे कर्ण के, उन्होंने उनको शाप दिया था कि जिस समय सबसे ज्यादा इन शक्तियों की जरूरत होगी जो मुझसे सीखी है, वो शक्तियां काम नहीं आएंगी. और इसलिए कर्ण जब वो शक्तियों को मांग रहे थे वो आई नहीं एंड में, और इसी वजह से उनको अपनी जान गंवानी पड़ी. तो कृष्णा कह रहे हैं कि वो जो फॉरगेटफुलनेस है, जो भूलना होता है, वो मैं देता हूँ, जो रिमेम्बरेंस है वो मैं देता हूँ. और a lot and lot of time this happens. Great scientists, but as we were discussing earlier, they got the disease and they forgot everything. They can't think of anything now, and it has happened. Sometimes the accidents happens, but sometimes these dementia is one of those which happens mostly in old age, but of course it's getting into the young age as well now. So dementia हम एक बीमारी को कहते हैं, पर ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो कि आपके पास सारी नॉलेज है पर कुछ हो गया आपके साथ और आपको सारी नॉलेज भूल गया, डेमेंशिया हो गया, आपको याद ही नहीं, अपने फैमिली मेंबर्स तक भूल जाते हैं. भगवान कहते हैं मैं वो देता हूँ, बट ऑफ कोर्स वो रिजल्ट में आती है. तो अगर हम इस स्लाइड पे वापस आए तो महातत्व इज द सोर्स. तो यहाँ पे महातत्व है जो सबका सोर्स है. महातत्व से अब क्या निकल रहा है, हम अगर ये देखें तो महातत्व, अगर हम वो पुरानी अपनी स्लाइड ध्यान रखें तो उस स्लाइड के अंदर सबसे पहले महातत्व है. अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं. महातत्व से फॉल्स ईगो नेक्स्ट निकलता है. वो फॉल्स ईगो, फॉल्स ईगो, फॉल्स ईगो, फॉल्स ईगो, राइट. सो वी हैव फॉल्स ईगो. या हमारे पास फॉल्स ईगो है. अच्छा, अब ये फॉल्स ईगो क्या होती है? व्हाट इज फॉल्स ईगो? Okay, Shivani is sitting next to me. So she said, I also have a question. So let's take Shivani's question. Yes, please. What is ego? Okay, so Shivani's question is, what is ego? तो शिवानी मेरे साथ में बैठी हैं, जो 9 years old है, 9 साल की हैं. वो क्वेश्चन पूछ रही हैं कि ईगो क्या होती है. अभी ईगो क्या होती है और फिर फॉल्स ईगो क्या होती है. ईगो को हम हिंदी में कहते हैं अहम. अहम, मैं. तो ईगो वो चीज होती है जो हम, जिसको हम आइडेंटिटी कह सकते हैं. ऐसी कोई भी चीज जिससे हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं. Any such things from which we identify ourselves could be considered as ego. So we have a big house. That house will become our ego, right? Who is the owner of this big house? Me. I am. So that's my ego, right? And who? Yeah. Yeah. So any toy you have, well, you got into a great grammar school. How and why? Because I did a great job. I worked hard. तो आपने जो भी जीवन में आपको मिला उसको आप अपने ऊपर लेते हैं. मुझको मिला, मेरी वजह से मिला, तो उसको हम ईगो कहते हैं. वो हमारा अहम होता है. और इसके आगे हमने फॉल्स वर्ड लगाया है जिसको हिंदी में हम कहते हैं मिथ्या. तो अगर हम ये ध्यान रखें कि जो भी मुझे मिला है ये मुझे मेरी वजह से मिला है, तो वो फॉल्स ईगो है, क्योंकि ये झूठ है. ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि मैं कहीं पे जाके कहूं कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं. ये मेरी आइडेंटिटी है. और मे बी फॉर अ व्हाइल आई एम प्रिटेंडिंग टू बी प्राइम मिनिस्टर. लेट्स से आई एम टेकिंग पार्ट इन अ ड्रामा एंड ड्यूरिंग दैट ड्रामा I am I'm a prime minister. That's an identity, but that's a false identity. Okay. All right. During the process of that drama, it's okay. It's for the purpose of drama. But as soon as I will come out of the drama, my real identity is not that. तो अगर मैंने किसी ड्रामा के अंदर पार्ट लिया हुआ है
और उसके अंदर अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बना हूं तो ठीक है, जब तक वो ड्रामा चल रहा है मैं कह सकता हूं कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, लेकिन वो मेरी रियल आइडेंटिटी नहीं है, वो मैं नहीं हूं। अगर ब्रेक में मैं बाहर जाता हूं तो मैं नहीं कह सकता कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, नहीं, वो तो मैंने अपने आप को ऐसा सोचा है कि मैं हूं, मैं वो रोल प्ले कर रहा हूं, या लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, राइट। जैसे कोई भगवान के रूप में बन जाता है, लोग उनके पैर छूने लगते हैं कि वो ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग उनके पैर छू रहे होते हैं। So the person is different, but the person thinks himself or herself different. And that's where the ego and false ego comes in. Yes? So basically, false ego is basically kind of like bad ego. Okay, so Shivani says false ego is a bad ego. Well, false ego is false. And yes, if we keep ourselves identified by that, then it could be bad for us. Well, it definitely will be bad for us. Like in the same example, if I will go home and I will think I'm the prime minister, I will start behaving as a prime minister, I will have a lot of trouble. I will go home, I will not do anything. I will say, oh, my secretary will do, my minister will do. Nothing will get done. Right? So yes, false ego is going to create problem, and that's what happens. The false ego, मिथ्या अहंकार, जो ईगो को हमने अहम कहा, वो अहंकार होता है. Now the great question could be, if there is a false ego, is there anything like true ego? Because we have false, so there might be something true. And yes, we do have true ego. For example, if I am Govinda, right? If that's my spiritual name, so I'm taking the part in the drama, and in the drama I become prime minister, but I know I'm pretending to be, but I am Govinda, and that Govinda is the true identity. And in this case, if we remember, Govinda is not this body, because his body is going to die, but the spirit soul inside is the true identity. So that's the very first realization. Anyone, doesn't really matter which religion or which part of the religion you belong to. So within Hinduism, there are different school of thoughts. Doesn't really matter which school of thought you belong to, or doesn't really matter whether you belong to Hinduism or you are in Islam, Christianity, Buddhism. That is the very first spiritual realization, that we are not this body, we are the spirit soul. Now, whichever way we understand, that's a different thing, but we got to understand that. जिस तरीके से हमने देखा कि जो हमारी ट्रू ईगो है वो ये है कि हम ये शरीर नहीं है, वो आत्मा है. अब वो आत्मा का परमात्मा के साथ, आत्मा का भगवान के साथ क्या रिलेशन है, वो सेकंड, और फिर उसके आगे थर्ड रियलाइजेशन के ऊपर आता है. लेकिन पहला रियलाइजेशन ये है कि जो ट्रू ईगो है मेरी, ट्रू आइडेंटिटी है मेरी, वो ये है कि मैं ये बॉडी नहीं, क्योंकि ये बॉडी जाने वाली है. और मजे की बात ये है कि हम जितनी भी लाइफ के अंदर अपने रिलेशंस देखते हैं वो इस बॉडी से ही देखते हैं. अगर आप देखें, अगर ये बॉडी चेंज हो जाए, अगर हम प्लास्टिक सर्जरी से फेस चेंज करा लें और हम अपने ऑफिस में जाके कहें मैं वही हूं, तो वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो हमको बॉडी से आइडेंटिफाई करते हैं. उनको छोड़े हमारे फैमिली मेंबर्स हमें नहीं मानेंगे, क्योंकि वो बॉडी से आइडेंटिफाई करते हैं. अभी चले, हमने बता दिया कि हमने प्लास्टिक सर्जरी करा ली है, उसके बाद वो हमको मान लेंगे अच्छा ये वही है. लेकिन उसके बाद माने मैं वो सब कुछ भूल चुका हूं, अपनी फैमिली के बारे में मैं सब कुछ भूल चुका हूं, जो मेरे माइंड के अंदर मेमोरीज थी वो सारी वाइप आउट हो गई है. Will I still be considered as the same person? क्या अभी भी मैं वही हूं, या अब मैं बदल चुका हूं? अगर हम सोच के देखें इस चीज को, मेरा प्लास्टिक सर्जरी हो गई, मेरा फेस चेंज हो गया, जो मेमोरी थी मेरी वो खत्म हो गई. अगर हमारे फैमिली में कोई भी फैमिली मेंबर है, the person does not look like what he used to be or she used to be. The person does not have any memory of us. Is it still the same person? Are we going to behave the same? Could we live that with that person? Because those things, the mind, the intelligence, the memory, the body, they all are material. तो अगर हम ये सोचें कि अगर हमारे साथ में कोई फैमिली मेंबर है, उसकी शक्ल चेंज हो चुकी है, उसकी सारी याददाश्त खो चुकी है,
वो हमको याद ही नहीं है, वो हमें याद नहीं रखता, हमारे बारे में कुछ नहीं पता, क्या वो वही इंसान है? मटीरियली अगर हम देखते हैं, क्योंकि हम मटीरियली ही एंगेज करते हैं आपस में, तो हमारे लिए वो इंसान खत्म हो चुका है मटीरियली. So from Mahatattva, the very first thing comes out is false ego. So the next layer in ingredient, in the creation, the next ingredient come out false ego. जो महातत्व से सबसे पहली चीज बनी वो है false ego, हमारा अहंकार. लेकिन अहंकार जो हमारा है, जो ईगो हमारी है, वो 3 डिफरेंट गुण में जाती है. गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस. सर गुडनेस में जाएगी, पैशन में जाएगी एंड इग्नोरेंस में जाएगी. सो ये नेक्स्ट लेवल है. अभी अगर हम देखें गुडनेस के अंदर, तो गुडनेस के अंदर जो देवी देवता आते हैं, जो हमने आदि देवी देवता का है, वो आते हैं. और डायरेक्शनल मूवमेंट in 10 different directions, we have the, like we said, the worshipable deity of each direction, and there are 10 directions. So how do we have 10 directions? We know the 4 directions. Then we have the middle. So these are 8. Then we have 1 up and 1 down. So these are the 10 directions we have. Right? So east, west, north, south, and the 4 in the middle, and then up and down. तो यहाँ पे जो डेमीगॉड लिखे हैं ये आदि देवता हैं, जो आदि देवता महातत्व से ही निकले हैं, और जो क्रिएशन में पार्ट लेंगे, और इसलिए वो गुडनेस में माने जाते हैं. ये वो देवता नहीं है जो कि अभी आगे आएंगे, वो देवता नहीं है ये जो कि स्वर्ग में रहते हैं. ये आदि देवता अलग हैं जो कि क्रिएशन के लिए भगवान ने भेजे हैं. और ये 10 होते हैं 10 दिशाओं के. और इसके साथ में हमारा मन है. Now it's very interesting, we will discuss this later, that mind is in goodness. But in Bhagavad Gita there is a verse, the mind could be your friend and it could be your enemy. तो भगवद गीता में एक वर्स आता है कि जो मन है वो हमारा दोस्त भी हो सकता है और हमारा दुश्मन भी. दोस्त तब जब वो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में हमारे साथ है, तब वो हमको ये बता के रखता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम इसके अंदर की आत्मा है. और दुश्मन तब जब वो हमको ये बताता है आत्मा को छोड़ो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो मटीरियली, तो वो हमको पैशन की तरफ ले जाता है, हमको इग्नोरेंस की तरफ ले जाता है. So when the mind takes us towards the passion and ignorance, then we can say that that mind is our enemy. But by default, mind is actually in goodness. But because of the coverings we have, you might have heard this number of times, that the mind, the soul is covered. And these are the coverings. These are the coverings. I'm going to first clear this off. 3 minutes left before we go any further. And there are many more slides on this. This is not the only one slide. There are different examples of this, starting from Mahavishnu. But we will go and we will see them in details. And if you see the name of those, Devtas are also there. And we will see. And all these details are given in Bhagavatam. If you have, or maybe I can share that now rather than sharing anything new. Maybe I share Srimad Bhagavatam verses, if in case anybody would like to read. So this says Canto 2, chapter 5. So the chapter 5 is called Cause of All Causes. So whatever we see here, what is the cause of all that? So I'm going to share the whole chapter here, and then feel free to read this if you like, and then next session we can do a lot more discussions. Hare Krishna. And I will share this with the audience in YouTube as well. Oh, okay, interesting. Hare Krishna. Thank you so very much. And any question on anything? All right, okay, great. Yes, thank you, Mataji.
Haribo. Let's finish it now because Mataji needs to go as well, and the time is up. So feel free, discuss among yourself, read what I've shared here, and try to understand. This is so interesting because this gives us direct perception of what we are. Nowhere else, I believe, that this much detail is given. What we are going to discuss even further, that how much in detail, that what was in a sequence, what was created first. Not that everything was created straight away. In sequence, how things were created. So think over it. If you have any questions, please raise them now, or feel free to take the week, read it through. And if you have read it, heard it from somewhere else, please share in the lecture, in the session, next class, and then we will take it from there. Hare Krishna. With that, Srila Prabhupada ki jai, Gurudev Maharaj ki jai. Jai Jai Shri Radhe Shyam.